बच्चे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया और हमने कूलम्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. राइट. बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दो चार्ज है हमारे पास. दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. Q1 and Q2 separated by a distance R. These two charges are placed in air or vacuum. The force between these two charges, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is in air or vacuum. तो F नॉट बोल देंगे हम इसको. अब बच्चे इन्हीं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं. Let me take these two charges in a medium of electrical permittivity epsilon. The force in a medium, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Epsilon, that is the electrical permittivity of the intervening medium. राइट. अब इसे देखो, आप इन्हें कंपेयर कर लीजिए. Dividing equation 1 by equation 2. Dividing equation 1 by equation 2. बच्चे जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, देखो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा. तो आपके पास क्या आ गया? एफ नॉट अपॉन एफ एम, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, which is known as dielectric constant or relative electrical permittivity. तो यहां से बच्चे अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी may be defined as the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electrical permittivity in air or vacuum. In terms of force, it is defined as the ratio of the force between the two charges in air to the force in medium. Right? तो ये हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमारी डिफाइन हो. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ we have to discuss superposition principle. Superposition principle. Or forces due to multiple charges. Forces due to multiple charges. Let me have a number of charges.
in a system, let we have a number of charge. Here, a charge Q naught is placed. This charge Q1, position vector of Q1, that is R1, this is the position vector of second charge Q2, and this is the position vector of nth charge Qn, right? तो बेटे यहाँ पे हम बात करते हैं this R10, the separation or the displacement vector between Q1 and Q2, that is R10. Similarly, these are the displacement vectors for the multiple charge. Now, according to superposition, the total force on this single charge Q naught, that is equal to the vector sum of all the forces due to these charges Q1, Q2, Qn and Q naught. तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स that is equal to F01, that means force between Q naught and Q1 plus F02, force between Q naught and Q2 and so on, that is F0, and this is your superposition principle. Let me have F01, that is force on Q naught due to Q1. F02, force on Q naught due to Q2. F0n, that is equal to force on Q naught due to Qn. Therefore, F01, force between Q naught and Q1, that is Q1, Q naught upon 4 pi epsilon naught R10 square. R10 cap. Unit vector. F02, similarly, F02, that is equal to Q2 into Q naught upon 4 pi epsilon naught R20 square R20 cap. Therefore, the net force F, that is equal to the sum of F01, F02, F0, and put this value here. तो हम क्या लिख सकते हैं? Q1 into Q naught upon 4 pi epsilon R10 square R10 cap.
प्लस Q2 Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R20 स्क्वायर R20 कैप एंड सो ऑन। बच्चे अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते, देखो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है, कॉमन क्या है, क्यू नोट कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, तो इन्हें आप कॉमन निकाल, तो आपके पास कॉमन क्या आ गया, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज द कॉमन वन, दिस इज Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप up to so on. We can write it in the form of summation. बेटे रिपीटेड है, देखिए I इक्वल टू 1 to n। देखिए बच्चे यहां पर हम लिख सकते क्यू आई आर आई 0 स्क्वेयर आर आई 0 क्या, दिस इज द फोर्स net force acting on Q naught due to these multiple charges Q1, Q2 and up to so। बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा, this force do not change or independent by due to the presence of another charges in the surrounding। ठीक है, तो बच्चे ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल खत्म हो गया। ठीक है।